Good morning everyone. In last class we have discussed chapter 8 of trigonometry. Now we start your next chapter 9, some applications of trigonometry. Before starting this chapter we discuss some important topics. First is angle of elevation. First is angle of elevation. Clear? Angle of elevation means if this is a building and this one is a horizontal line. Clear? And here is any object, and here we are standing. This one is our eye. Clear? We are seeing from here. This is called line of sight. And the angle formed between line of sight and horizontal line is called angle of elevation. Is called angle of elevation. This one is called height. The vertical distance is called height. Clear? The angle between line of sight and the horizontal line is called angle of elevation. Clear? Angle of elevation is the angle between line of sight and the horizontal line is called angle of elevation. And next is B. Second is angle of depression. Second is angle of depression. This is a triangle. Now our eye is here. Clear? This is the line of sight. And this line is horizontal line. Clear? This angle, this angle is called angle of depression. Clear? Angle of elevation means when we are seeing from down to top in a diagonal way. When we are saying from down to top in a diagonal way, then the angle formed between line of sight and the horizontal line is called angle of elevation. This angle is called angle of elevation. And the angle of depression means when we are seeing from top to bottom in a diagonal way. Then the angle formed between line of sight and the horizontal line is called angle of depression. Note करके point write करो. This is the angle of depression and this is the angle of elevation. If we are seeing from here, so you note down a point. Angle of
elevation, angle of elevation equals to angle of depression. Okay, angle of elevation and angle of depression are same. That means when we are seeing from top to bottom, then angle of depression form, and we are seeing from down to top, then angle of elevation form. Angle of elevation and angle of depression are same. Okay, now note down. Now we solve exercise 9.1. Question number first is, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. That means आपको इस टाइप से गिवन है. This is a pole. This one is the pole. Clear? And the pole, the rope is stretched at the top, and the angle form is 30 degree, and the length of the rope is 20 meter. So we assume A, B and C. Clear? It is given that a circuit artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. So this is a pole. A B equals to क्या है आपके पास में? Pole given है, and it is the rope is top of a vertical pole to the ground. रोप आपके पास में यहाँ से टाइटली टाइट किया हुआ है, यहाँ से बंधा हुआ है, और वर्टिकल पॉइंट्स इस टाइप से हैं. क्लियर? दिस एंगल इज 30 डिग्री. नाउ फाइंड इफ द एंगल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. दैट्स मीन्स आपको ए बी फाइंड करना है, एंड आपके पास में ए सी आपको गिवन है. क्लियर? तो हाउ यू फाइंड? फ्रॉम ट्रायंगल ABC. From triangle ABC, this is the angle of elevation. So angle of elevation, that means this is the height in perpendicular. This one is perpendicular and this one is hypotenuse. Perpendicular and hypotenuse, and we know pile beta, pile ha बेटा. ये होता है आपके पास में. ठीक है, आपको गिवन क्या है यहाँ पे? आपको गिवन हाइट है 20 मीटर, एंड वी फाइंड ए बी हाइट पोल, परपेंडिकुलर वी फाइंड. तो यहाँ से देखो, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस रिलेशन इज बिटवीन, इज द रेशियो रिप्रेजेंट साइन थीटा. सो वी राइट फ्रॉम ट्रायंगल साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, sin 30 degree is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is AB and hypotenuse is AC. Hypotenuse is AC equals to AB. AB we find, and value of AC is 20 meter. Now we know what is the value of sin 30 degree. Value of sin 30 degree is 1/2.
AB upon 20. You know how we find the value of sin 30 degree? By trigonometry table. By trigonometry table, value of sin 30 degree is 1 upon 2. Okay, now we find AB. AB equals to 20 upon 2 equals to 10. Clear? Therefore, the height of the pole equals to 10 meter. Answer. Clear? To show this types of question, first we make a triangle. Yeah, first we make a figure from this figure by using trigonometry ratio we find the height. आपको कभी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो तो वी ऑल्सो फाइंड द हाइपोटेन्यूज. बेस आपको फाइंड करना हो तो यू ऑल्सो फाइंड द बेस. आपको वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चूज करना है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको रेशियो की फॉर्म में जो गिवन होता है. जैसे यहाँ आपको आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज गिवन है, सो वी चूज साइन 30 डिग्री. इफ आपके पास में परपेंडिकुलर और बेस आपके पास में होता तो वी चूज tan थीटा. क्लियर? Okay, now question number second is at tree bricks. Question number second. Question second is at tree bricks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Clear? That means tree आपके पास में किस टाइप से होगा? ट्री वर्टिकल पोजीशन में होगा. This is the tree and now tree break down from here. This is the horizontal line. Clear? Now tree ब्रोक डाउन फ्रॉम हेयर और ब्रोक डाउन होकर के वो इस टाइप से आपके पास में टच हो गया. एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड नेम ऑफ ट्रायंगल इज ए बी एंड सी. एंड इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर. दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर. Clear? Find the height of the tree. Find the height of the tree. Find the height of the tree आपको find करना है. Clear? तो देखो this is the height of the tree. This is the height of the tree. Clear? तो we assume this height is h1 and this height is h2 and total height is h equals to h1 plus h2. Clear? Clear? Okay, first we find h1, after that we find H2 and H2 is equals to AC. भाई ये तो आपके पास में यहाँ से ब्रोक हुआ, यही तो आपके पास में ऐसा आ रहा है. इसका मीनिंग AC इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास में? H2. ओके. क्लियर? दिस इज द ब्रोकन पार्ट एंड इट इज इक्वल टू H2. दिस वन इज द broken part and this one is equals to H2. Now we first find H1 from triangle ABC. First we find H1, base is given, so we use tan 30 degree. Tan 30 degree is perpendicular upon base.
perpendicular upon base. Perpendicular is AB and base is BC. Perpendicular क्या होगा? Just opposite to angle is called perpendicular. Value of angle tan 30 degrees. Value of tan 30 is 1 upon root 3. Clear? AB, value of AB is H1 and value of BC is 8. Implies that H1 equals to 8 root 3. This is the value of H1. Clear? Now we find value of H2. Now again from triangle ABC, now we find hypotenuse and the relation between hypotenuse and base. Relation between hypotenuse and base is cos 30 degree. This one is cos 30 degree. Cos 30 is base upon hypotenuse. Base is BC and hypotenuse is AC. Implies that what is the value of cos 30? Cos 30 is equals to sin 60. So this is the value of cos 30 is root 3 upon 2 equals to BC is 8 and AC is H2. Implies that H2 equals to 8 to the 16 upon root 3 is the value of H2. Value of H2. Value of H2 is 16 upon root 3. Clear? Okay. Now we find H. Total height आपको find करना है. Therefore height of tree. Height of the tree. H equals to H1 plus H2. Implies that H equals to H1 plus H2 equals to value of H1 is 8 root 3 and value of H2 is 16 upon root 3. ये हो रहा आपके पास में. क्लियर है? क्लियर? ठीक है. एक मिनट आप यहाँ ध्यान रखो. देखो H1 इक्वल्स टू ये 8 अपॉन रूट 3 होगा. क्लियर है? यहाँ ध्यान रखो आप 8 अपॉन रूट 3. क्लियर? 8 अपॉन रूट 3. तो यहाँ से भी आप वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 8 अपॉन रूट 3. वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 8 अपॉन रूट 3. ठीक है. अब अपन यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको. यहाँ पे कर लेते हैं. इम्प्लाइज दैट H इक्वल्स टू आपके पास में वैल्यू क्या गिवन है 8 अपॉन रूट 3 प्लस 16 अपॉन रूट 3. तो वी टेक द एलसीएम रूट 3. एलसीएम इज रूट 3 एंड 8 प्लस 16 एज इट इज. इम्प्लाइज दैट H इक्वल्स टू 24 अपॉन root 3. Now we remove this root 3 by multiplying denominator and numerator by root 3. Clear? Imply that H equals to 24 multiply root 3 upon, when you multiply root 3 by root 3 you get 3. 3 1 जा 3, 3 8 जा 24. Implies that H equals to 8 root 3 meter is the answer of this question. Clear? You can also put the value of root 3. Value of root 3 is 1.732. So by multiplying 8 you also find, आपका यहाँ भी आंसर राइट है,
you can also put the value of root 3, and value of root 3 is 1.732. You can also put this value 1.732, and when you multiplied 1.723 by 8, you get the answer. This answer is also right. Clear? This answer is also right. If you put the value, if option type क्वेश्चन हो आपको पॉइंट्स में गिवन हो तो सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ रूट 3 इक्वल्स टू 1.732 एंड मल्टीप्लाई बाई 8, यू गेट द आंसर. सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू 8√3 मीटर. क्लियर? वो याद यहाँ रखना अपने पास में. यहाँ हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, अपन ने क्या राइट कर लिया था, H1 आप फाइंड करोगे तो H1 एट ट्रांसपोज होगा यहाँ पे, तो H1 इक्वल्स टू 8/√3 होगा एंड H2 इक्वल्स टू 16/√3. नाउ वी फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ ट्री H इक्वल्स टू H1 प्लस H2, देयरफॉर H इक्वल्स टू 8/√3 प्लस 16/√3, and √3 is the LCM. Now we remove √3 from denominator, तो multiply by the same number denominator and numerator. √3 when you multiply √3 you get 3 से कट हो गई वैल्यू, तो H इक्वल्स टू at √3 is the answer. Okay, note down. Next, question 3 is, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? Clear? So case first we solve case first. In case first, it is given below the age of 5 year. Below the age of 5 years, it is given. Case first, below the age of 5 year, it is given for the children below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. ठीक है? Clear? This one is the ground and this one is the top. 1.5 meter from the ground and it makes angle 30 degree with the ground. Clear? Okay. What should be the length of the slide in each case? आपको length of slide find करना है, that means आपको ये वाली length find करनी है, तो we assume that this length is L1. Clear? A B C is a triangle. So how you solve? From triangle A B C, from triangle A B C, tan 30 degree, tan 30 degree, sorry tan 30 नहीं, we use the condition we know, perpendicular base perpendicular and hypotenuse base. Clear? So it is relation between hypotenuse and perpendicular. Hypotenuse and perpendicular relation is sin theta. Sin 30 degree. Sin 30 degree is perpendicular AB upon hypotenuse. Hypotenuse is AC. Value of sin 30 degree is 1/2 equals to AB is 1.5 upon AC. AC we assume L1. Clear? Implies that L1 equals to 1.5 multiplied to
equals to 3. Therefore length of the slide, equals to 3 meter. Answer. This is the answer of your first case, below the age of 5 years. Now case second is for elder children. Clear? For elder children, it is given in the question that steep at a slide at a height of 3 meter. Now height is 3 meter. This is the ground. Okay, A, B, C. You can also write PQR. सेम क्वेश्चन है तो PQR भी राइट कर सकते हो आप. क्लियर? एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री. It is given this angle is 60 degree and we assume this is the length, slide length L2. Clear? For elder children. So now we solve from triangle PQR. Sin 60 degree equals to PQ upon PR. Value of sin 60 is root 3 upon 2. PQ is 3 upon PR is L2. Clear? Implies that L2 equals to L2 यहाँ आ जाएगा आपके पास में. दिस 3 multiply 2 upon root 3. 3 multiply 2 upon root 3 implies that how you solve this? Multiply by root 3 and divide by root 3 implies that L2 equals to 3 multiply 2 multiply root 3 upon 3 root 3 multiply root 3 3 से 3 वैल्यू आपके पास में कट हो गई equals to 2 root 3. Therefore the length of the slide equals to 2 root 3 meter is the answer. Clear? क्लियर है सबके? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चंस आपको गिवन है. बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, व्हेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर द लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर एंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन द लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 2 रूट 3 मीटर. क्लियर? सिंपल आपको ये फिगर बनाना आना चाहिए. ठीक है, फिगर आपका करेक्ट है तो आंसर आपका करेक्ट आएगा. ये आपको पता होना चाहिए. परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर. ठीक है, आपको वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है जो क्वेश्चन में आपको, जो साइड क्वेश्चन में आपको गिवन हो. क्लियर? ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. So in question we know this one is the tower and this one is ground. A, B and C. This is the height of tower we assume
h. Clear? And the distance between the foot of the tower angle is given 30 degree and the distance from the foot of the tower is given 30 meter. ठीक है, these are the this is the foot of the tower and distance is 30 meter. Clear? Find the height of the tower, that means find the value of h. So we solve from triangle ABC. From triangle ABC, base and hypotenuse, then we use tan theta. Tan 30 degree equals to AB perpendicular upon base equals to BC. Implies that value of tan 30 is 1 upon root 3 equals to AB is h upon BC is 30 meter. Implies that h equals to 30 upon root 3. Implies that h equals to 30 upon root 3 multiply and divide by root 3. Implies that h equals to 30 multiply root 3 upon root 3 multiply root 3 is 3 से कट करो. Implies that h equals to tan root 3. Hence height of the tower. Hence height of the tower equals to tan root 3 meter. Answer. Hence the height of the tower equals to tan root 3 meter. Clear? You can also put the value of root 3. We know value of root 3 is 1.732. So 17.32 meter is the answer. ये भी आपके पास में आंसर राइट है और ये वाला भी आंसर आप राइट कर सकते हो, दोनों आंसर राइट है. ठीक है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एंड यू कैन ऑल्सो पुट द वैल्यू ऑफ रूट 3. वैल्यू ऑफ रूट 3 इज 1.732. तो 17.32 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है? क्लियर? तो इस एक्सरसाइज में अपन ने क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं. आपके समझ में आया होगा कि किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है. ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन नेक्स्ट क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन करने की आप कोशिश करना. ठीक है, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट क्लास. ओके, डू दिस ऑल क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक. ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.